Sansara Dhavana Dalita Loka. To Dhavanana, Dhavanana means a great forest fire. And a great forest fire is burning in the material world. Somehow or other, what chance do we have? When there is a great forest fire, what can you do? Not so much. Sometimes the fire moves so fast that even by car you cannot escape. In Australia, they have so many instances. You can ask Jira Silva, he knows. And so what can one do? So the Acharyas explain that the material energy is overpowering to a point that is beyond our control. No matter what we do, there's no way you can control such a blazing forest fire. Sometimes they try and send helicopters and throw some water. But what is that in comparison to a big rain? When big rain comes, it finishes off that fire, just like that. Finished. So that rain of mercy is the mercy of the Lord. And that rain comes in the form of devotional service, of Sudha Bhakti, of pure devotional service. Savai Pumso Paru Dharme Yato Bhakti Yadoksha Jaya Haidiki Yatiyata Yayat Vasupasidati. This pure devotional service can fully satisfy the heart. That is the essence. Nothing else. No matter, nothing else can extinguish the blazing forest fire. Because where is that forest fire burning other than in our hearts? The burning forest fire of endless material desires. That is what is burning in our hearts. Sansara Ravana Lida Loka. So it is the rain cloud of mercy of the Lord that relieves the Lida Loka, the suffering people. Tranaya Karunya. By all that mercy, Tranaya, are they delivered. So, coming in the form of a rain cloud, Krishna's mercy comes in the form of a rain cloud. The carrier of these rain clouds are the spiritual masters. That mercy is coming from the unlimited ocean of Krishna's mercy. And it rains into our material life. Just like Arjuna was in the middle of material life. Arjuna was, it is said, Visada Yoga. He was turning to the Lord, but in Visada Yoga, in lamentation. But he was turning to the Lord. But if we turn to the Lord out of lamentation, that will not suffice. Then, in the second chapter, Krishna began to analyze things. So that was Sankhya Yoga. So in the second chapter, Krishna begins to give a logical analysis. Arjuna, why are you so worried now? Arjuna, don't forget, Najayate Mriyate Vakadachi, you never take birth, you don't die. Nahanyate Hanyamani Sabiri, the soul is not slain and the body is slain. Asochana Vasochastvam Pakyavadam, supposed to say you are mourning for what is not worthy of grief. So in this way, Krishna established the truth
In the 3rd chapter, Krishna says, Kamarupena kunteya dushpurena nadena cha. That it is this lust that is burning. It is the cause of the forest fire. And it is situated in the mano buddhi, it is situated in the senses, in the mind, and in the intelligence. So, in this way, the Bhagavad Gita is establishing our predicament. Evam parampara praptam imam rajasyo vidu. In the 4th chapter, we receive transcendental knowledge in parampara, in a disciplic succession, so that it is safeguarded, that it is protected, that it is from speculation and misconception, and that it is dharam to saksat bhagavat pranitam, that it is directly representing Krishna. Because all knowledge begins with Krishna. There's no question of anybody coming up with a new idea. It is Krishna who gives knowledge. It's not, I've just made this discovery. That is not so successful. It is what Krishna has revealed to us through the disciplic succession. Yes. In the 5th chapter, we find description about sannyas yoga. Sannyas yoga, and it says, not he who lights no fire. It is sannyas yoga, basically, it is yukta vairagya in that chapter. Nirbandha Krishna sambandha. That yes, as long as you connect with Krishna, yes, then use. So in this way, the Bhagavad Gita is preparing us. In the 6th chapter, we're looking at the yoga ladder. Karma yoga, jnana yoga. We're looking at bhakti yoga. Shadavan vachate yoman. Sama yuktatamo mata. That is the topmost. And then Maya Shakta. Then, if we get this Ashakti Yoga, the next Ashakti Yoga, that we are making that connection with Krishna in attachment, then it changes. That's where it begins. When we actually appreciate. No longer just, okay, Krishna is the Supreme Lord, I accept that, He's the Supreme Controller, I accept that, therefore I bow down to Him. Bhaktaram yake tapasam sarvaloka maheshwar. Yes, He's the Supreme Enjoyer, yes, He's the Supreme Controller. So, alright, I'll accept that. No. Now, attachment to Krishna. That's where real bhakti begins, with attachment to Krishna. Lord Chaitanya's movement is operating on attachment. That attachment to Krishna is the essence of what is being offered in devotional service. So, we are praying for that attachment, and whenever we get in touch with the mercy, then automatically attachment connects us. We will get attached whenever we are in touch with the mercy. And that mercy comes in so many forms. In the forms of devotees, in the forms of deities, in the forms of the holy name, the forms of prasadam, in the form of the holy Dharma. Many great devotees in our movement, they had the good fortune of being in the association of Srila Prabhupada, and there they got special mercy. I did not have that good fortune not to be in Prabhupada's personal presence, but I had the good fortune of being for a long time in Srila Prabhupada's holy Dham. Somehow or other,
that was where I got the mercy, in large doses. That should never be underestimated, to stay in the Holy Dham and to serve in the Holy Dham. Not just to be in the Holy Dham, that is a good thing, but to serve in the Holy Dham is a greater thing. That's where somehow or other Krishna was so present. When I came to Vrindavan, I didn't really know much about Vrindavan. Someone had told me I should go to Vrindavan, and that when I came to Vrindavan, I immediately could sense that it was a very spiritual place. And I could sense the presence of Krishna in Vrindavan. And as I stayed there in the Krishna Balaram Mandir, Krishna's presence was so strong. Wherever we are in Vrindavan, we always feel that maybe Krishna just left. Maybe he was just here some minutes ago. But then, we are looking for Krishna, but he is so close. But as I stayed there in the Krishna Balaram Mandir, after some time, I began to realize that even more than Krishna, Srila Prabhupada is present in Vrindavan. Because there he served Krishna, and there he arranged everything personally. In Vrindavan, Prabhupada was personally taking care of everything, and he was pointing out everything about everything. There he was personally serving Krishna. So when we are in Vrindavan, every corner reminds us of Srila Prabhupada, and of the instructions he gave, and how in Vrindavan, yes, Prabhupada is leading us, because after all, who else is with Krishna? To really be in Vrindavan, one must be with Krishna. We can go there, plane, by road from Delhi, with some prayers. Akrura drove with his chariot from Mathura to Vrindavan, and he was praying. We drive with our chariots from Delhi, and we are also praying because of the driving. Anyway, somehow or other, when we come to Vrindavan, that is our good fortune. But how much can we enter? That is the question. Uddhava came, how much could Uddhava enter? Uddhava came from Mathura. He was the greatest devotee outside of Vrindavan. Uddhava, when he came, he could not enter. Not in the same way as the residents of Vrindavan. So he prayed to be a blade of grass, isn't it? To get that mercy, so that he could also enter. So if Uddhava couldn't enter, then how can we enter? That's what I wonder. That's what I realized when I stayed in the Dham for a long time. Did I really enter? I was thinking, I stayed so long in the Holy Dham, but did I actually even enter into the Dham? No. But then again, I came to Vrindavan through the Prabhupada gate. There is the Prabhupada gate. So I came through the Prabhupada gate, Bhaktivedanta Swami marked through the Prabhupada gate. I said, well, whatever shortcomings I may have, through that Prabhupada gate, through that connection with Srila Prabhupada, yes, then it is possible. Because Prabhupada attracts Krishna's mercy, and then Krishna will surely be kind upon us, and somehow or other increase our attachment, increase our advancement, and eventually make us desire to be residents of Vrindavan. So in this way, Mauritius is not so far from Vrindavan. It's like a short flight.
This little savings and you can go. And there are many devotees from Mauritius. Always. This is like standard thing. So yes, you should all come. So we want everyone to save something and come to Vrindavan. Make some plan. Of course. Don't rob the bank or something like that, but save it and come. That will be very good. Because there we'll get so much mercy. This evening, I also have one devotee with me. He's already been here for some time. He is from Vrindavan, because he joined in Vrindavan. So it's Vrindavan devotee, Radhashama Sundar, sitting next to me. Radhashama Sundar Prabhu has been in Vrindavan many years and is now preparing for sannyas, and he will be with me for the next 3 weeks. So he will also say a few words about Vrindavan. And he prefers to speak in Hindi, और आप लोग तो हिंदी समझते हैं थोड़ा सा, सब लोग तो बिल्कुल ठीक हिंदी नहीं जानते हैं, मैं जानता हूँ, और बूढ़ा लोग तो अच्छा जानता है, लेकिन तो आजकल तो लोग हिंदी थोड़ा भूल गया और दूसरा को सिर्फ भोजपुरी आती है, और भोजपुरी का भी बिल्कुल मैं क्या बता देंगे, भोजपुरी तो बहुत बढ़िया है, लेकिन थोड़ा दूसरा है, लेकिन कृष्ण की कृपा से समझने तो जरूरत नहीं है। तो राधाश्याम सुंदर अभी तो हिंदी ना कर सकते। हरे कृष्णा। श्री श्री वृंदावन धाम के जगत गुरु श्रील प्रभुपाद के हिज होलीनेस कदम कानन स्वामी महाराज के ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो वृंदावन धाम जैसे ब्रह्मा जी बोलते हैं, चिंतामणि प्रकृत सदमस कल्प वृक्ष लक्षाव्रतेश सुरवीर विपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र सत संभ्रम सेव्यमानं गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। मैं उन गोविंद का भजन करता हूँ जिनका धाम कैसा है, चिंतामणि। चिंतामणि का बना हुआ ये धाम है। आप चिंतन करो, फट से नहीं ले लो। You have any desire, then you only do desire, then immediately fulfill that desire. तो चिंतामणि का ये धाम बना हुआ, वहाँ के जो वृक्ष हैं वो कल्प वृक्ष हैं। दिस इज नॉट ऑर्डिनरी, ये सामान्य जो है वृक्ष नहीं है। दिस वेरी ग्रेट सेज जो साधु हैं वही वृक्षों के रूप में हैं। तो इसलिए वृक्ष भी कैसे हैं, कल्प वृक्ष। यू थिंक एनीथिंग, वृंदावन में एंटर करने से पहले हमें क्या सोचना है, ये विशेष करके ध्यान रखना चाहिए। इफ यू हैव दिस material desire, then this also fulfill, and you have also spiritual desire, that also they fulfill.
आपकी कैसी भी जो इच्छा है वो पूरा होती है। तो इसलिए वृंदावन में कभी भी मेटीरियल डिजायर से नहीं जाना चाहिए। जैसे प्रभु जी महाराज जी बोल रहे थे कि अक्रूर जी गए और उद्धव जी गए, दे हैव वेरी स्पिरिचुअल डिजायर। तो इसलिए वृंदावन जो है वो कल्प वृक्षों से भरा हुआ है। वन टाइम कोई एक जो है परिक्रमा कर रहा था वृंदावन की, गर्मी का समय था, तो परिक्रमा करते करते थक गया क्योंकि वृंदावन की गर्मी वेरी हैवी। तो वो परिक्रमा करते करते जो है उसको लगा कि थोड़ा सा रेस्ट लूं, तो एक पेड़ के नीचे बैठा तो उसको बहुत अच्छा लगा। ही फीलिंग वेरी नाइस, ओह वंडरफुल। अब उसको थोड़ा सा भूख एहसास हुआ, कुछ हंग्री, ही फीलिंग जस्ट हंग्री। देन इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, देन दिस एक प्रसाद का जो है पूरा प्लेट, 56 भोग, सो मेनी आइटम देयर, तो जस्ट कम डाउन, उसके पास में आ गई और उसने क्या किया, उसको बहुत अच्छी तरह से खाया। तो आहार, और आहार के बाद निद्रा, इमीडिएटली बिकॉज ही इज टायर्ड आल्सो, तो जस्ट उसको जो है निद्रा आने लगी। और जैसे ही निद्रा आने लगी तो ही थिंक वो सो गया वहीं जो है बिछा करके, थोड़ा सा रेस्ट किया। तो क्योंकि वो रेस्ट किया तो इमीडिएटली बहुत गहरी नींद में सो गया। और व्हाट हैपेंड, देन दिस नाइट, सूर्य अस्त हो गया, थोड़ा अंधकार हो गया। जब अंधकार हो गया तो उसकी आंखें खुली, उसने देखा तो ओह नाइट कम, अंधकार हो गया है। तो सॉरी मेरी इंग्लिश, तो अंधकार में उसने सोचा क्या बात है भाई, क्योंकि उस समय बहुत, महाराज जिस समय गए थे उस समय भी नेचुरल वृंदावन दैट टाइम आल्सो, बट नाउ इज वृंदावन जस्ट लाइक ए बिग सिटी, बट दैट टाइम दिस नेचुरल वृंदावन। तो उस समय उसको जो है फीलिंग हुआ कि भाई कहीं से जो है शेर ना आ जाए। तो इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, देन लॉयन विल कम, वहां जो है शेर आया। और इमीडिएटली जब शेर उसने देखा तो डर गया, अरे खा नहीं जाए। और व्हाट हैपेंड, देन जस्ट वो खा गया शेर। तो वृंदावन में हम कैसी डिजायर लेकर के जा रहे हैं, आप जो है सोचना चाहिए। तो इसलिए कल्प वृक्ष लक्षाव्रते सुरवीर विपालयन्तम, उस वृंदावन में जो है असंख्य असंख्य गायें सर्वत्र जो है विचरण करती रहती हैं। लक्षा आवृतेषु, करोड़ों मिलियंस काऊ विल देयर। तो भगवान क्या करते हैं, उन गायों को प्रोटेक्शन करते हैं, गायों को चराते हैं भगवान, गायों के ऊपर हाथ फेरते हैं भगवान, गायों से प्रेम करते हैं भगवान। इफ यू प्रोटेक्ट दिस काऊ देन ऑल वर्ल्ड कैन सेव। यदि आप गायों को प्रोटेक्शन देंगे सारा संसार सेफ रहेगा। क्योंकि गाय एक ऐसा है, आप भी देखेंगे भारत के अंदर एक ट्रेडिशन है, जब कोई शरीर छोड़ता है बाई चांस ही फीलिंग सफरिंग दैट टाइम, तो इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, दे से ओ ब्रिंग वन काउ, गाय लाओ और इसको गाय ऑफर करो। और जैसी गाय देते हैं इमीडिएटली लेफ्ट बॉडी। तो गाय के देने से गाय क्या करती है, उसके सारे पापों को या कष्टों को अपने ऊपर ले लेती है। केवल गाय ही एक ऐसा है। और ये जो वृंदावन है वो गायों से भरा हुआ है। तो इसलिए लक्षाव्रतेषु सुरवीर अभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम्। ओ भगवान, असंख्य असंख्य भगवान श्री कृष्ण असंख्य लक्ष्मियों के द्वारा उस वृंदावन धाम में क्या होते हैं, सेवित रहते हैं। असंख्य असंख्य लक्ष्मियां उनकी सेवा के लिए सत संभ्रम अटेंशन की पोजीशन में खड़ी हैं कि हमें एक सेवा के लिए कुछ अवसर मिले। और हमें कुछ सेवा के लिए अवसर दिया जाता है तो बस इमीडिएटली टोल्ड, प्रभु प्लीज आई नो हैव टाइम, हम मेरे पास अभी समय नहीं है, फिर हम कुछ सेवा करेंगे। तो वास्तव में ये भी एक मर्सी, जैसे महाराज सेइंग मर्सी कम सो मेनी वेज, मर्सी केवल एक स्थान से नहीं आती है, सो मेनी वेज मर्सी है। तो कोई सेवा का अवसर दिया जाए तो इमीडिएटली थिंक
वास्तव में भगवान की मर्जी है कि जो हमें सेवा के लिए अवसर दिया जा रहा है। लेकिन लक्ष्मी सहस्त्र शत संभ्रम, उनकी सेवा के लिए भक्तों की कमी नहीं है, असंख्यों अनलिमिटेड भक्त भरे पड़े हुए। तो वृंदावन धाम के बारे में हम आप लोगों को इतना कहेंगे कि सारे तीर्थों का राजा है कौन? प्रयागराज। सारे तीर्थ जो है जाते हैं अपने पाप को नष्ट करने के लिए प्रयागराज में, और ओ प्रयागराज जब सारे तीर्थों का पाप ले ले करके और फिर जो है वो पाप के कारण बहुत जिसको अब उसकी क्षमता खत्म हो जाती है दूसरों के पाप को खत्म करने के लिए, देन ओ प्रयागराज क्या करता है? वो आता है वृंदावन के अंदर एक ब्लैक हॉर्स, एक काले घोड़े के रूप में। वन टाइम दिस ऑल ब्रजवासी थिंक अभी हमें जो है कुछ 4 धाम यात्रा करना चाहिए, ब्रजवासियों ने ऐसे सोचा। सो दे आर मीटिंग वन प्लेस, देन इमीडिएटली कृष्ण कम देयर एंड ही आस्क्ड बाबा 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 व्हाट गोइंग ऑन हियर। तो उन्होंने नंद बाबा ने कहा बेटा देखो अभी नाउ अवर ओल्ड एज, सो आई वांट गो सम 4 धाम यात्रा। तो उन्होंने कहा जो है कृष्ण ने कहा बाबा आप 4 यात्रा को क्यों जाना चाहते हैं? सारे धाम तो यहाँ वास करते हैं, आप वहाँ क्यों जाना चाहते हैं? तब जो है नंद बाबा ने कहा कि नहीं नहीं बेटा यहाँ नहीं, जो है हम जाएंगे थोड़ा गंगोत्री जाएंगे, जमुनोत्री जाएंगे, केदारनाथ जाएंगे, बद्रीनाथ जाएंगे, थोड़ा जो है वो करके आएंगे। तो कृष्ण ने कहा कि बाबा यदि हम 4 धामों को यहाँ बुला दें तब क्या करोगे? बोला हाउ इट इज पॉसिबल। बोला पॉसिबल क्या है वो सब बात की बातें हैं, पहले आप बताओ यदि हम धाम को यहाँ बुलाते हैं तो यू चेंज अवर डिसीजन। तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम डिसीजन को चेंज करेंगे, लेकिन आप हम बुलाओ कैसे बुलाओगे? तो इमीडिएटली व्हाट हैपेंड, ही सॉ वन ब्लैक हाउस कम देयर और इमीडिएटली ही रोलिंग दैट ब्रज रज, और व्हाट हैपेंड ही कलर दिस व्हाइट। जैसे ही उस ब्लैक घोड़े ने ब्रजभूमि की रेती में रज में थोड़ा सा रोलिंग किया, इधर उधर हुआ, और जो काला घोड़ा था इमीडिएटली चेंज दिस व्हाइट हॉर्स, सफेद घोड़े के रूप में हो गया। तो सारे ब्रजवासी जब देखे तो बड़े दे आर वेरी सरप्राइज, व्हाट दिस, हाउ इट इज पॉसिबल। तब उन्होंने बताया कि बाबा देखो ये जो घोड़ा है दिस इज नॉट ऑर्डिनरी हॉर्स, ये है प्रयागराज है, प्रयागराज ये घोड़े के रूप में आता है। जब सारे तीर्थ जिन तीर्थों में आप जाना चाहते हो वो तीर्थ अपना टैक्स लेकर के जाते हैं प्रयागराज में, और प्रयागराज जो है आता है यहाँ टैक्स देने के लिए, वृंदावन धाम में आता है। तो इसलिए दिस इज प्रयागराज। जब प्रयागराज पापों से कलुषित होता है तो वो भी जो है इस ब्रजरज में आता है, रोलिंग करके जो है फिर फुल एनर्जी ले करके और जो है एकदम प्योर हो करके, और इसके बाद में फिर चला जाता है प्रयाग को। तो इसलिए वृंदावन की जो महिमा है उसके बारे में क्या कहा जाए, संसार के जितने भी पवित्र स्थान हैं इस सारे स्थान मिल करके इतना फल नहीं दे सकते इतना ब्रज की एक रज दे सकती है। आप सोच सकते हैं ब्रज की रज है दैट, ब्रज की रज जो है वो पावर रखती है कि ब्रह्मांड के सारे तीर्थ मिलकर के जो पुण्य नहीं दे सकते हैं वो केवल ब्रज रज दे सकती है। तो इसलिए आप सभी को हम और कितना वर्णन कर सकते हैं उस ब्रज के बारे में, जहाँ सारे ब्रह्मा जैसे देवता, शिव जैसे देवता, स्वयं लॉर्ड विष्णु आल्सो दे आर ऑल वन स्टोन, एक पहाड़ के रूप में वो बात करते हैं। ब्रह्मा जी जो है बरसाने में वो जो है पहाड़ के रूप में है, शिव जी जो है नंदगांव में वो पहाड़ के रूप में, और गिरिराज महाराज के विष्णु है वो भी जो है पहाड़ के रूप में है। तो आप सोच सकते हैं कि बड़े बड़े देवता जो है उस पहाड़ के रूप में वहाँ बात करते हैं। तो उस ब्रज के बारे में हम कितना कह सकते हैं, इतना ही कह सकते हैं कि ब्रज में यदि आस्था है तो वास्तव में ये जो है बहुत पुण्यों के बल से है, और ये गारंटी है इसी जीवन में वो भगवत प्राप्ति करेगा। लेकिन ब्रज की आस्था को जो है डेवलप करने के लिए यू शुड फॉलो, क्योंकि वृंदावन में एंटर करने के लिए विदाउट परंपरा है एवं परंपरा प्राप्त
भगवान की मर्सी को हम जो है डायरेक्ट नहीं ले सकते हैं। भगवान की मर्सी को विदाउट परंपरा के द्वारा हम जो कुछ भी ऑफर करते हैं वो परंपरा के द्वारा भगवान को प्राप्त होता है। और भगवान की मर्सी आल्सो कम डाउन इन परंपरा। तो इसलिए हमें फॉलो करना चाहिए प्रभुपाद जी के जो है आदेश का पालन होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग साधना भजन होना चाहिए हमारा। तो अवश्य ही हम जो है वृंदावन धाम की और श्री कृष्ण राधा कृष्ण की हम मर्सी को हम प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा। ब्रजभूमि वृंदावन धाम के जगत में श्रील प्रभुपाद के हरे कृष्ण। बहुत धन्यवाद। So Radha Shyama Sundar has described how in Vrindavan there are many holy places, and he points out that these places are invested with all transcendental energies, and even the Char Dham are present in Vrindavan. Even Prayag came in the form of a black horse, rolled in the dust of Vrindavan, became purified and became white. Because although Prayag is the topmost of all holy places, even Prayag becomes purified in Vrindavan. So yes, that is our desire, to make these connections with Srila Prabhupada's mercy. And we are doing that together. Somehow or other, we come together. This evening we came together in this pandal, some kirtan, to warm up, because it's been a long cold winter in Mauritius, and it's still a little fresh. You can still feel the chill, but the kirtan warms us up thoroughly, and we will now do it every day. So you have to come every day also. And we will make a big festival like this for the next few weeks in Mauritius. And then by our chanting, just by chanting the holy name and some little discussion on Krishna Katha, all the mercy will come. So since you forgot chanting, I'll chant 5 minutes now, but only 5 minutes, just to sort of remind you of the holy name before you go to sleep. But now not so violent like the first, a little more.